Yeah. So today we are going to review the applications of electrolysis. And after that, we will do some past paper questions for this. So there are kind of like three main applications of electrolysis. First one, hold on, there's an echo here. Yeah. Okay. So the first one is electroplating. And electroplating is one of the bigger umbrella here is the barrier methods. And barrier methods are basically because we want to safeguard something made of metal or some metal from the environment. From it could be oxygen in the environment, it could be wear and tear on the outside. So barrier methods are very useful to safeguard any substance. The simplest barrier method that we know of is paint or lubricant. फॉर एग्जाम्पल आपने घर का गेट है उसको जंग से बचाना है, यू वांट टू सेफगार्ड फ्रॉम रस्टिंग, यू विल अप्लाई पेंट. लेकिन गाड़ी के इंजन के अंदर एक छोटा सा पीस है, आपने उसको भी जंग से बचाना है. अब वहां पे पेंट अगर करेंगे, बिकॉज गाड़ी चलती है, फ्रिक्शन होती है, वो खराब हो जाएगा, वो पेंट उतर जाएगा. सो वहां पर वी यूज अ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट इज यूजली ऑयल्स होते हैं, वैक्स होता है, वी यूज इट ऑल द टाइम. हम लोग अपनी स्किन है हमारी इंसानों की, इसमें से वाटर इवेपोरेट कर जाता है जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है. वी वांट के वो ना हो, वी वांट आवर स्किन टू मेंटेन वाटर. तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर मॉइस्चर की एक लेयर लगा देते हैं. जो वो मॉइस्चर की लेयर होती है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर. नाउ दैट बैरियर विल नॉट लेट वाटर क्रॉस दैट. तो हमारे जो पोर्स होते हैं उसमें से बहुत हद तक पानी का निकलना हम ब्लॉक कर देते हैं. और जब वो ब्लॉक हो जाता है तो हमारी स्किन फील्स बेटर बिकॉज इट्स नॉट ड्राई, स्पेशली इन अ वेदर जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है. So paints and lubricants are used all the time for many purposes, and one of those purposes is to make sure that the metal does not react. The second one is galvanizing. Galvanizing is not electrolysis. It's simply that you take whatever metal you have, you dip it in zinc. So zinc को melt करते हैं. Zinc has a low melting point, relatively low melting point. So जब वो liquid होता है तो उसके अंदर उसको dip कर देते हैं और उसके ऊपर एक layer आ जाती है. But here's a problem with the layer. You know, liquids, they trickle down. So layer uniform नहीं होती. नीचे वाली साइड पे ज्यादा जिंक आ जाएगा, ऊपर कम रह जाएगा. It's not uniform. So it works, but it's not perfect. It doesn't look that good. So where looking good is important, or if something is more expensive, then we do electroplating. Electroplating is that you do electrolysis, but based on whatever you want to basically plate. So जिस चीज को आपने प्लेट करना होता है, वो चम्मच हो, वो गाड़ी हो, वो कुछ भी हो, वो रिंग हो, you keep that as your cathode because that is where the metal ions will come. And the anode will be whatever you want to plate. So if you want to plate gold, then you keep anode of gold. You want to plate silver, you keep anode of silver. Now, once you have that set up, so this is how it goes. I'll give you an example. Let's say there's a ring that I want to plate with gold. So I will take the ring. So that ring is going to be my cathode, which means it should have a negative charge. So ये negative होता है. And on the positive side, I will have a small piece of gold. And I want to do electrolysis. Now to do electrolysis, I need an electrolyte. So I'll dip them in electrolyte. And this electrolyte is usually salt of the same metal. So you might want to get gold nitrate or gold sulfate. But in many cases, that can be difficult to get. So what we do is we get something that is more reactive than that. Jesse, we might get copper sulfate. Copper sulfate will work here. It is good because it is more reactive. Copper is more reactive than gold. But usually, हम अगर silver कर रहे होते तो we would have taken silver nitrate. So first preference is कि आपने जो metal plate करना है उसी का ही आप substance ले लो. फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब इसके ऊपर प्लेटिंग होगी तो गोल्ड आ सकता है और कॉपर भी आ सकता है. बट अगर आप कॉपर की बजाय गोल्ड का ही कोई सॉल्ट ले लेते, गोल्ड नाइट्रेट ले लेते, तो अब कोई चांस नहीं है कि इस गोल्ड या इस गोल्ड में, सॉरी गोल्ड नहीं है, सिल्वर है, गोल्ड अगर ले लेते, सो
आपके पास इम्प्योरिटीज का चांस कम हो जाता है अगर आप सेम मेटल का सॉल्ट लें, लेकिन अगर ना भी लें, यू टाइम योर सेल्फ, यू मेक श्योर कि अभी भी इम्प्योरिटी कम से कम आए. नाउ व्हाट विल हैपन? रिमेंबर द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. स्टेप 1 क्या था? You check about the anode. Anode is reactive, it will ionize. So gold will form gold ions and lose 2 electrons. ठीक है. Now एनोड डिसॉल्व हो गया. अगली बात हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन से कैटाइन कौन से एनाइन. क्यों? क्योंकि एनोड हैज डिसॉल्व्ड, डिस्चार्ज होना ही नहीं वहां पे किसी ने. रिमेंबर द रूल्स जो हमने कल पढ़े थे. द रूल्स वर सिंपल. इफ एनोड इज रिएक्टिव इट विल डिसॉल्व. If it's not, then you check for concentrated halide. So we don't need to check that. Now for cathode, we just take the less reactive. So what ions do we have? We have copper ions, we have newly made gold ions, and we have hydrogen ions from water. So अब इन तीनों में gold सबसे कम reactive है. So gold ions will go, take 2 electrons and make gold atoms, but over here. So after a while, you will see a layer of gold on this ring, and that is electroplating. So does anybody understand this? Any questions? Can you set up, use this as an example, and I want you to set up a way in which you have silver plating on some cutlery. Everybody should do it with the equation. So electrolysis, as I said, that is one use of, electroplating is one use of electrolysis. Second use of electrolysis is metal purification and extraction. So I'll first start by an example of purification. Copper is purified using electrolysis. क्या करते हैं हम उसमें? होता क्या है? Copper is very low reactivity, right? So and we use it all the time, especially electric wires वगैरह में, सब में वो use होता है. So हम करते ही हैं कि we take copper जो भी impure होता है उसको एनोड पे रख देते हैं. द गोल हेयर इज कि यहां से कॉपर विल मेक आयंस एंड वी विल ट्रांसफर इट ऑन द अदर साइड जहां पे हम प्योर रख लेते हैं.